एंटायर यूनिवर्स, हर एक प्रकार के अनिष्ट तत्व पूरे सृष्टि को घेर चुके, और तब तक मनुष्य ने कभी भी इसका कभी भी इतना अनुभव नहीं किया था. दे वर लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल लाइफ. हाउएवर, बिकॉज ऑफ दिस पेंडोरा मिस एडवेंचर, उनकी ये दुस्साहस के कारण ये परिस्थिति हुई. पेंडोरा घबरा गई और उन्होंने एकदम जल्दी से बॉक्स को बंद कर दिया, और एक चीज़ अंदर रह गई जो कभी भी बाहर ना आ पाई, उस समय बाहर ना आ पाई. एंड आफ्टर एन इनटर्मिनेबल पीरियड ऑफ टाइम पेंडोरा अगेन विजिटेड दैट बॉक्स, और वो बॉक्स उन्होंने खोला और उसमें से जो चीज़ रह गई थी वो बाहर आ गई. एंड दैट इज़ होप, यानी कि आशा. और इसलिए हम कहते हैं कि जब एकदम मिजरेबल पीरियड चल रहा हो, एकदम डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा हो, तब आशा ही हमें जीवंत रखती है. आज के ये जो हमने जो इंटरैक्टिव सेशन ख़त्म किया, और उसके कारण अगर आप लोगों की लाइफ मिजरेबल होने जा रही है या हुई है, तो आई एम श्योर होप विल कीप यू किकिंग एंड अलाइव. थैंक यू वेरी मच. Eminent speaker with us. He has delivered very good guidance, valued guidance. Really, we are very lucky to today evening have such a knowledgeable persons with us to tell us everything. He has given all the government guidelines, pre-history of the GST. I am very much impressed with he has given how it is originated, how these thoughts has come to the government. He has also given us the various countries from Germany to Malaysia, how it has been adopted by that countries and how it has come to in India. Everything, our line, our questionnaire are also be satisfied. He has taken all the pre-question, Mr. Jayant Bhai and the Rushabh Bhai has met 2 times and given all the questionnaire. I think we all would be satisfied. Still, if anybody has any questions, please raise. Sir, can we have some time? Sir, I just want you to inform us 5 things that we should do from now till the 30th of June, so the transition onto the first will not be very difficult. Sir, you are not, 5 things will not be sufficient. You will have to probably do 500 things. Right? So, take stock of your situation, right? Your stock. First, you have to establish what is your status. Are you a manufacturer? Are you a trader? Are you a retailer? Are you a retailer optician? First, you have to do that. Are you a person who is taking the orders only for the spectacle frames and then getting them made? Right? There are few people who also do that. So, you have to take stock of that. Then you have to identify out of which, what is your turnover. Whether you are likely to be going below 75, whether you want to go for composition, whether you want to go for exemption. Are you entitled for that? Will you be entitled for that? If you are going to fall under the tax net, suppose, then you have to see how fast you are, how well you are geared up for your IT operations. That is the must. On one side, physical stock. On second side, your IT operations. Third side, your procurement policy. Fourth, your distribution marketing policy. And fifth, your cash flow. These are the 5 major issues which are going to be affected. Impact analysis के लिए अभी time नहीं है किसी के पास. But those who are actually organized people, organized unit, बड़ी कंपनी है, वो आज 2 साल 3 साल से impact analysis कर रहे हैं GST की. So you have to plot the transactions कि आज मैं इस प्रकार से मेरा धंधा कर रहा हूँ. इसी प्रकार के whether I will be able to do it under GST as per law 1. If I do it, then what will be the impact? अगर वो impact negative आ रही है, then what are the ways out where I will have to change? आपकी procurement policy है. आज आप कभी भी चिंता नहीं करते हो आप किससे procurement कर रहे हो. वो registered है या unregistered है, OMS है या within state है. अगर वो reasonable, आपका criteria सिर्फ price का है और वो आपको टैक्स क्या चार्ज कर रहा है और बाकी सब क्वालिटी और आपके संबंध. जीएसटी में फंडामेंटली क्या होगा, कोई भी कारण से जीएसटी में इस देश में आज के कारण इनडायरेक्ट टैक्स के कारण पर्टिकुलरली टैक्स हैज़ बिकम द मेन फैक्टर फॉर बिजनेस डिसीजन. आज कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस डिसीजन ले रहा है, नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले वो क्या पूछता है कि इसके ऊपर टैक्स क्या है एंड व्हाट कैन आई डू टू अवॉइड द टैक्स. इसलिए रातों रात सब बड्डी चले गए. पूरा गुजरात फार्मा हब था खाली हो गया. गिविंग यू एन एग्जाम्पल.
right? Nobody talked about logistic, transportation, availability of the resources, skill, manpower, land वगैरह कुछ भी नहीं. 20 साल का टैक्स का एग्जाम्पशन है, I will go there. तो टैक्स is deciding your business decision. Under GST, tax will become the least botheration. It will be the last criteria, and business factors over a period of time will take over. तो आपको ये सोचना है कि अभी मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कोई बड़े अगर ऑर्गेनाइज ग्रुप है, दे विल हैव टू सी कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, हाउ फार इट इज़ कंड्यूसिव, वेदर इट इज़ लीडिंग टू अननेसेसरी पेपर वर्क, कंप्लायंस, कैश फ्लो, वो हमें सोचना है. अनरजिस्टर्ड सप्लाईज मेरी जो हो रही है, तो अनरजिस्टर्ड सप्लाईज यू मे हैव टू बी वेरी वेरी एब्सोल्युटली रूथलेस. Either you may have to stop taking from unregistered suppliers, or you may have to curtail them down. So certain are immediate, certain are in a mid term. क्योंकि एक बार 1 जुलाई से लॉ लागू हो गया तो ये URD भी आपको लागू हो जाएगा. So these are immediate. But as I see the priority at this stage, in other circumstances it would have been something else. The main is your stock position, the status of your stock position, keeping your stock status in mind, your IT capability, किस तरह से वो, whether how far they will be, you are ready for that, and then simultaneously your purchase, your procurement policy, distribution policy, marketing and cash flow वगैरह. Simple questions. One is if I'm doing a promotion, like buy 10, take 2 free, I cannot supply at 0 price. As tally and all, you have to supply at 1 rupee. So do I charge GST on that 1 rupee also? You see, you have to charge on 1 rupee, but then you will run into the valuation problem. So what is the solution? The valuation, because the two which you are giving free, if you are just simply charging 1 rupee, it is not necessary, department will not accept it as a proper value. Instead of that, basically this is something like quantity discount, correct? Correct. Discount के लिए GST में there are 2 provisions. The one is, if the discount is known to both the parties from agreement, and if you show the discount in invoice, you have to separately show, then discount is admissible, no GST on it. अगर डिस्काउंट आप पोस्ट सप्लाई दे रहे हो, क्वांटिटी डिस्काउंट या कोई डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई दे रहे हो, देन देयर आर 3 कंडीशंस. 1, इट शुड बी नोन टू बोथ द पार्टीज के हमें ये टर्नओवर डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा इफ आई लिफ्ट सो मच ऑफ क्वांटिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल. सेकंड, कि वो डिस्काउंट शुड बी आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर इनवॉइस, दैट इज सेकंड, कि ये इनवॉइस के सामने मैं आपको ये डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये सप्लाई के सामने. एंड थर्ड, द बायर शुड हैव रिवर्स द क्रेडिट, क्योंकि इनिशियली उसने फुल क्रेडिट ले ली होगी. तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस, ये जो मैंने जो बाई 1 गेट 1 फ्री है, तो माई पॉइंट इज दिस, इट इज़ बेटर 12 की आप टोटल जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू, उसको दिखा के उसमें आप 20% का डिस्काउंट दे दीजिए. That will be That is the simple. most safe period. To just give a straight discount. Yeah, to the bill. exactly, straight discount. Don't get into that 1 rupee and all that. Now, we import cases, but we give the case complementary with the frame, and we just show it as consumption. So how do I show that case? There is nothing like, sir, consumption now, because वो केस पे आपने IGST भरोगे आप. No, we have paid import duty on the case. ना, तो that is basic custom duty plus IGST. वो IGST की आप क्रेडिट लेंगे. Correct. Correct. Now under these circumstances, this case की जिसके पर which is for you, it is a for valuable consideration आपने import किया हुआ है और आप इसको फ्री दे रहे हो. With the spectacle. विद द स्पेक्टिकल. तो वो स्पेक्टिकल फ्रेम में उसकी केस आ गई, तो यू डू नॉट हैव टू शो द केस एज अ फ्री ऑल्सो. यू आर गिविंग द स्पेक्टिकल अलॉन्ग विद द केस, और उसकी टोटल प्राइस आ गई, तो IGST की क्रेडिट है. आप स्पेक्टिकल बेच रहे हो, केस के साथ उसको दे रहे हो, उसके पर आपने जो CGST, SGST या IGST जो भरा हो, इट इज एंड ऑफ द मैटर. But in accounting terminology, I just show it as a consumption in my books. नहीं, I don't show it as sale. नहीं, don't show it as a, whether you call it as a consumption. Ideally, it is not a consumption. It is a actually, the supply along with the main spectacle. So whether you show it as a consumption, your utilization or disposal doesn't matter. It's allowed to show as Yeah, consumption. I you can don't show bill that. it separately. We'll have to see that. The terminology is not important. The thing is that this case is going along with the spectacle. उसकी figurative value आपने spectacle की price में mark कर दी है. That's all. I do a branch transfer in Bombay from company A to its own division B. Yes. Do I again Within have to Bombay? charge? Within Bombay, within the same office. नहीं, that is जो branch transfer within the same office. I mean a division. नहीं, division यानी it must be at somewhere else, right? So in that case, if it is the same entity, there will be documentation required, no GST payable. No. Within the state, even if you have more than one business places in whatever form, चाहे head office,
branch office, godown, stockyard, yeah, whatever you call it, right? Within the state, there is no GST payable. So in, It is only one entity with one PAN number. but it has a different trading name, a division. No, trading name division, they both cannot go together. Entity is one, PAN number is one. Entity आप is उसका नाम कुछ भी दीजिए, it doesn't matter. So no GST. No, is no, required. you will get only one GST number only. Correct. So no GST is required. No to GST branch required to transfer be in the खाली same state. documentation आपको करना है. Yeah. Thank you. Sir, whether residential bungalow attract the GST if rent receive more than 20 lakhs? I told you, na, residential rent will not be under GST at all. Acha, one more No, thing. no GST. One more. Performance bonus given by the employer to the employee, whether that No, performance bonus is a part of the financial package. It has nothing to do with. वो जो प्रॉब्लम है वो खाली 50,000 इन काइंड कुछ गुड्स के फॉर्म में गिफ्ट दे रहे हो तो. suppose employer can give car or anything. नहीं वो बराबर है. I mean, congratulations to you. You are even thinking नहीं, in these it's terms. okay. Yeah. नहीं, I am entitled to performance link bonus. नहीं तो कार वगैरह then there will be a problem. Okay. For I mean whoever gets it, Yeah. whoever gives it. Yes. How would be the stock treatment? I mean, see, I have the stock of items which is under one particular HSN code. While I am filing the return, how will that stock be treated? Whether it will be line item wise? How will it be treated? As of now, you proceed on the basis that it will be a line item wise. Right? तो जो declaration आप देखेंगे ना transitional provisions के, first of all you will have to see under which provision you are making the declaration. Section 140, 1, 2, 3, 4, everybody is covering different situation. Okay. So one is for the normal people who have a credit balance lying in their books of account. Normal manufacturer, supplier who is excise registered or service tax registered. For them declaration is something different. 140 by subsection 2 is for capital goods. 50% credit मैंने last year ले लिया, 50% credit बाकी है. या मैं first time pay कर रहा हूँ और I am taking the credit as a first time trader करके मैं ले रहा हूँ. और मेरे पास वो कैपिटल गुड्स में पड़ा हुआ है वेट का, तो देन आई एम एंटाइटल. देन देर आर इन, सो दिस इज अ डिफरेंट, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट इट विल डिपेंड. यू विल हैव टू. So what is my stock will be available with the department on their side? Yeah, declaration में it will be available. That is will be available. Paying GST on it. Ultimately you will be using that material. So those who are actually going for the registration, right? तो खाली वो क्रेडिट ले रहे उसके लिए नहीं है. दिस इज द डिपार्टमेंटल राइट नाउ माइंड सेट. या क्रेडिट भले नहीं ले रहे हो सर, क्रेडिट या बराबर है. द क्वेश्चन हियर इज दिस, हाउ द डिपार्टमेंट वुड नो कि यू आर कैरिंग फॉरवर्ड दिस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विच यू वुड बी सेलिंग आफ्टर GST केम इनटू इफेक्ट. RCM. Now all the expenses down the line, that indirect expenses are covered under RCM. If it is from unregistered, yeah. From unregistered. So I have to, in the month of July, I have to pay the tax, or I No, have August. to just show. You have to show it, separate record रखना है आपको. Okay. And then उसके पर आपको कैश में भरना है अगस्त महीने में. Because no RCM payment will be allowed by using the credit. आपको कैश में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, नॉर्मल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं एडवोकेट सर्विस, GTS सर्विस, स्पॉन्सरशिप, वो जो सारी जो दिस इज कमिंग अंडर सेक्शन 9(3), राइट? तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, वो नॉर्मल है जो आज भी है, और एक अनरजिस्टर्ड वो सेक्शन 9(4) में है. वो दोनों में, हाँ, तो दोनों में आपको RCM में जो भी टैक्स भरना है वो कैश में भरना है, और उसके बाद ऑन अदर हैंड यू हैव टू टेक द क्रेडिट इफ अलाउड एज पर लॉ. Okay, so major expenses in this trade is of the commission paid to the agents. The commission agents are most probably below 20 lakh. Unregistered persons. Yes. So in that case, I have to pay first, Pay first. and in the next month, हाँ. I will No, take the credit. when reverse charge mechanism में I didn't go into that. Then there are three other concepts: time of supply, value of supply, and place of supply. For any tax liability. Okay, at what point of time the supply is deemed to have been made, जिसको हम सर्विस टैक्स में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स कहते हैं. तो द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इज डिफरेंट, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज इज डिफरेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इम्पोर्टेंट, इट इज़ द हार्ट
because place of supply will decide whether it is a intrastate supply or interstate supply. Definitely. Correct? So based on that you have to pay, but you have to understand that practically you have to pay that money in cash Okay. on RCM and then take immediate credit. तो वो आमने सामने ही होगा क्योंकि you will be recording this transaction during the month, Yeah. filing your outward supply, inward supply return. Yeah. Correct? This is your inward supply. Yeah. Only the liability you are discharging. You are discharging the liability. It is a inward supply. आपने supply खरीदी है unregistered से. But I have to show in outward, na? No. It is not your outward supply, sir. But it's a reverse charge. Reverse How- charge mechanism, you do not become yourself outward supplier. Only the liability is shifted on you. Okay. Liability. Liability remains is what is shifted to you, but you do not become the supplier of that thing. It is a reverse payment only, it is shifted on you. So in the month in which I am Yeah, making the payment, I am eligible. Immediately in that month आपका एडजस्ट हो जाएगा सामने Adjust हो सामने जाएगा. एडजस्ट So हो no जाएगा. need to pay anything. नहीं ये जो कैश भरना है ना, कैश भर के क्रेडिट लेनी है, तो क्रेडिट लेने के कारण आप उतना कैश योर नॉर्मल सप्लाई में कम भरोगे. Okay. ओके Sir. बट आप पाँव वड़ा पे क्रेडिट मत लेना क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस पे क्रेडिट नहीं अवेलेबल है. Sir, जो स्टॉक दिखाते हैं वो वैल्यू वाइज दिखाना पड़ेगा, क्वांटिटी एंड वैल्यू? क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन